Okay, so we have one person over here. Two. Okay, so hi Prashik Gaikwad. Hi all in one. Okay. So how many more people to join? Let's see. Okay, join guys. Join fast. I don't know why am I nervous. I'm feeling nervous for now. I don't know why. Okay, hi Facts Marathi. Hi all in one again. Hi Mandar Savant. Okay, more people. Hi, hello Neha. Hello Shreyas Shinde. Have I read it right? Yes, I've read it right. Hello Srisht Joshi. Hello Neha from Jaipur. Hello. Oh, Mandar Savant is from Kolhapur. Okay, hello Mandar. Hello Shubham S. Gupta. Hi. So happy to see your video after just being back from college. Oh, that's even great for me because officially touch wood today. My first year is finally done. I gave my last practical, that is my physiology practical for my first year MBBS today, and I'm sure that I'll at least pass my first year. Uh, so yeah, nothing. So that मैंने सोचा था कि क्या करूँ फर्स्ट ईयर खत्म होने की खुशी में. So that's when I decided that I'll do a live. That would be more like chilled, and I wanted to just sit down and talk to you guys and answer your questions. Hello Tanya. So that's why I decided to do a live. And I guess the last live we did was in January, right? January 2000, like of course 2022 January. I don't remember what date exactly. Being an MBBS student is so cool. Yeah, Tanya, like it is cool being an MBBS student. Of course, you get to be a doctor to many people, or even before you become a doctor. And secondly, I would say that I am having some sense of nostalgia from the first year. So yeah, being an MBBS student is cool and it's interesting. Shreyas Shinde has asked, when will 2022 batch start for first year MBBS? Okay. Now this is an interesting question. अच्छा हुआ स्टार्टिंग में ये पूछ लिया because many of you might be waiting for the answer. तो अभी देखो बात क्या है, वी आर 2020 बैच राइट, हम लोग का नीट 2020 में हुआ था, तो हम लोग का फर्स्ट ईयर अभी खत्म हुआ है, दैट इज नाउ लाइक टुडे एग्जैक्टली. तो हम लोग अभी सेकेंड ईयर में जाएंगे. द करंट फर्स्ट ईयर बैच विच बिगैन इन मार्च will have their exams in the next coming February. So you could again expect yourself that the current 2022 batch will begin with their first year mostly in the next year, February, March, like at the earliest, if things go as planned and if we do not have another wave of COVID and all. Let's just hope, yeah, we do not have another COVID variant wave, because then then everything will get disrupted. All in one, at school as well as hectic being in MBBS. We've completed SUPEX in 3 weeks. Oh my god, 3 weeks in नहीं, but 3 weeks is a considerable duration. Like depends अगर तुम्हें dissection सारे करने मिले कि नहीं. But yeah, for a person beginning with anatomy, it can be a bit hectic finishing like 1 unit. But you have to get yourself into habit. The best tip would be कि रोज की रोज पढ़ाई करो. नेहा ब्रो, मुझे मुंबई में कॉलेज चाहिए 15%, तो कितना स्कोर करना होगा, प्लीज टेल मी. Okay, if you belong to the open category, aim for a 640 plus, I would say. Yes, 630, 640 plus, because then you're just ensuring yourself a seat in a good college, like in the good 4 5 colleges which are there in Mumbai. योगेश झाल्टे हेलो. अथर्व पाटिल सर, मेरे मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं ना, आई वुड से कि जस्ट मॉक टेस्ट देते हो तो जस्ट एनालाइज द होल पेपर कि क्या क्या गलतियाँ हो रही है, क्या क्या मिस्टेक्स यू आर रिपीटिंग, बिकॉज व्हाट हैपेंस मोर ओवर ना कि वी टेंड टू रिपीट मिस्टेक्स. अगर एक हमारी मिस्टेक हो रही है ना कोई एक टॉपिक में, तो हम लोग उसको रेक्टिफाई जितनी जल्दी नहीं करते ना, उतने वो हम लोग हर पेपर में मिस्टेक करते रहेंगे. So do that, and of course keep on revising the old stuff. Super with general and that. Okay, that's good. Shreyas Shinde, then why the hell are they conducting exams in July? I told you, they are just conducting exams in July because, like, for two things, कि तुम लोग को बहुत ज़्यादा gap मिल जाएगा. And second thing, see now last year also they conducted the exam in September, right?
तो उसके बाद उन लोग ने एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट किया समवेयर टुवर्ड्स द नवंबर एंडिंग, इफ आई एम नॉट wrong. November ending or December के टाइम पे they began with the admission process. So that's what they will be doing this year. Okay, now the chat has begun to run a bit. Can we use central EWS certificate in state counseling? See, I'm not sure about the documents part. You know, it would really be good if you all go to the websites and check out, because बात ये है ना कि अगर मैंने तुम्हें कुछ बताया अगर वो सही नहीं निकला then you know it will be a big loss to you guys. मुझे इतना पता है कि स्टेट का EWS सर्टिफिकेट अपने को वो एक इसका ऑफिस रहता है बोरीवली में भी वो ऑफिस है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है. आई मेल डॉक्यूमेंट्स का वीडियो, जस्ट चेक दैट आउट, मैंने उसमें सब कुछ बताया है. Can we use when will you get your degree, I mean before or after an internship? Of course, in like as well as India is concerned, you get your degree after an internship, of course. um, Fourth year के बाद you are just like, you know, you get your professional working license. College time has increased from 8 a.m. to 6 p.m. That us why portion is going fast. Okay, I think that will happen, yeah, because see, technically the first year got to be of 15 to 16 months, but अभी वही syllabus तुम लोगों को एक 10-11 months में. और देखो अगर तुम पकड़ दो कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी एग्जाम नेक्स्ट फरवरी में है, तो तुम्हारी प्रीलिम्स हो जाने चाहिए हम लोग जैसे दिसंबर में, बिकॉज यू एटलीस्ट नीड अ मंथ आफ्टर प्रीलिम्स टू प्रिपेयर फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. सो तुम लोग को पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस 9 मंथ्स में कवर करना है, तो ऑफकोर्स वो थोड़ा फास्ट जाएगा सिलेबस. भैया मुझे स्टेट कोटा ओबीसी कट ऑफ क्या है दीजिएगा. सी मैंने ना सारे कट ऑफ के वीडियोस बनाकर रखे हैं, तुम चैनल पर देख सकते हो. इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट वीडियो कट ऑफ का ही वीडियो था, तो जस्ट देखो. एंड मैं बोलता हूँ कि देखो कट ऑफ ज़्यादा वेरी नहीं होते, प्लस 10-20 -10-20 का डिफरेंस होता है ज़्यादा से ज़्यादा. Shreyas Shinde, what are we gonna do for rest of the months? I would just say that it would be better if you channelize yourself into doing something more, like you know, मतलब ऐसे like interesting hobbies वगैरह कर सकते हो. Because मैंने भी यही किया था. I had like 3 months after Neet with myself, so I that's when I began my YouTube channel and I started putting actual efforts into it. Okay, hey, I'm from Mumbai South. Let's see. What's the safe score to be in 2022? It's my first attempt. Please reply. By the way, no, thank you. Okay, thank you. So, what is the safe score? Now, for government and for open category, the safe score would I would suggest that it would be somewhere around 590 to 600, but aim for 600 plus. You know, that's the way you will ensure yourself into a good government college. Okay, like a decent government college. Okay, don't you stay in hostel of GMC Mumbai? How is hostel quality? पर्सनली स्पीकिंग मेरा हॉस्टल का अभी खत्म होने आ गया है टेन्योर, बिकॉज मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हो गया है, राइट. एंड मुझे हॉस्टल वैसे भी लेट अलॉट हुआ था. ऑनेस्टली इफ हैव टू रेट द हॉस्टल, देन द लिविंग कंडीशंस आर नॉट गुड एट द ओल्ड बॉयज हॉस्टल. बट देखो जे में ना 4 हॉस्टल्स है टोटली. सो इट इज़ लाइक यू नो द ओल्ड बॉयज हॉस्टल, RM भट्ट हॉस्टल, PG हॉस्टल एंड द ये अपना अपना बॉयज हॉस्टल. तो उसमें ऐसा है ना कि ये ओल्ड बॉयज हॉस्टल के लिविंग कंडीशंस थोड़े खराब है, स्पेशली इन समर्स. इट्स वेरी वेरी हॉट. एंड अभी ऐसा है कि अभी मुझे कॉलेज ही नहीं है, तो मैं हॉस्टल में रहकर करूँ क्या. अभी सिर्फ 3 दिन प्रैक्टिकल था मेरा, तो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट स्टे इन द हॉस्टल. Okay. Sage GS, how is the college? Sage GS is a great college. Like who said it? It is a good college. भैया GMC पुणे BGMC पुणे पर वीडियो बना ना. Okay. Yeah, I do want to make a BGMC पुणे वीडियो, बट बात ऐसा होता है ना कि मेरा BGMC में कोई जान पहचान वाला है नहीं, तो मैं BGMC जाकर मैं BGMC जाकर मैं वीडियो बनाऊँ. मेरी बहन कॉल कर रही है, एनीवेज आई एम नॉट गोइंग टू रिसीव द कॉल. तो वो एक है. इवन आई वांट टू स्टार्ट मेकिंग वीडियोस ऑन अदर कॉलेजेस, बट यार बात ये होती है ना, लाइक आई रियली फील बैड व्हेन यू नो व्हेन यू गाइस वॉच सो मच ऑफ माय कंटेंट बट यू डोंट सब्सक्राइब. यू नो आई जस्ट शो यू वन फनी थिंग. मुझे देखने दो, मुझे एनालिटिक्स में मिल रही है क्या वो चीज़. जस्ट अ सेकंड. अरे मैंने वाईफाई बंद कर दिया एंड आई एम एक्सपेक्टिंग माय फोन टू वर्क. वाओ. ओके, सो कौशल्स वर्ल्ड स्टेट कोटा प्लस SC कैटेगरी में एडमिशन क्या है. ओके फॉर स्टेट SC कैटेगरी ना, सॉरी SC कैटेगरी के लिए पूछा था. तो SC कैटेगरी आई वुड से 550 प्लस का एम करो, बिकॉज देन यू विल गेट अ गुड गव्हर्नमेंट कॉलेज इन 550 प्लस. ओके. PW साठी किती असेल कट ऑफ. PWD साठी तर कमी जातो यार, बराच कमी जातो. आय गेस 6 लाख 7 लाख पर्यंत रँक पर्यंत तुम्हाला JJ KEM सारखे कॉलेजेस मिळतात. सो यू सेफ लाईक 5-6 लाखचा हे किती असतो अप्रॉक्सिमेटली 250 मार्क्स पर्यंत असतो. Okay. Okay. So what I wanted to show you all was, hold on. 2 minutes रुको. Yeah. So देखो तुम लोग ही देख लो. वॉच टाइम फ्रॉम यूट्यूब कहाँ गया. आई डोंट नो ये फोकस क्यों नहीं हो रहा फोन मेरा. अरे
गलत चीज़ से फोकस हो रही है ऐसी। तुम लोग देखो सब्सक्राइब लोगों से कितना है ना अनसब्सक्राइब लोगों से कितना है। तो यही मुझे बुरा लगता है यार कि यू गाइस वॉच माय कंटेंट, you guys love it. Approximately 80% of the people watching my content haven't subscribed to my channel. Only 20% have. MAMC is love. Yeah, Maulana Azad is again a great college. Of course it is love. Anyways, but 8 to 6 कॉलेज तो हम सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे प्लीज गाइड। 8 to 6 कॉलेज रहेगा। देखो दैट्स द थिंग ना कि अगर 8 to 6 कॉलेज है यू नीड टू फ्रेम योर सेल्फ टाइम टेबल। अभी बात ऐसी है कि तुम लोग क्या कर सकते हो कि अभी 6 o'clock के बाद जैसे मैं क्या करता था, मेरा कॉलेज 9 to 5 होता था तो तुम लोग से 2 घंटा कम, ठीक है। तो वॉट आई यूज टू डू इज पहले तो क्लासीफाई योर लेक्चर्स। मैं सच बोलता हूँ पूरी 100% अटेंडेंस रखकर तुम्हें कोई कुछ ऐसा प्राइज नहीं देने वाला है। तो वॉट यू कुड डू इज डोंट स्टार्ट बंकिंग लेक्चर्स राइट नाउ, बट आई वुड सजेस्ट कि जैसे जैसे टाइम में लगता है कि अगर एक पर्टिकुलर टीचर का लेक्चर है कि यू नो दैट टीचर इज नॉट एक्चुअली टीचिंग एंड वो टाइम पास करवा रहा है, सो एंड यू नो यू कैन जस्ट स्पेंड दैट टाइम मोर प्रोडक्टिवली स्टडिंग बाय योर ओन सेल्फ, then what you could do is just sit in the canteen, or rather in the canteen sit in the library, or sit at some spot in your hostel or somewhere and study for that time. And दूसरी बात मैं जो बताऊंगा ना कि लेक्चर्स में ध्यान दो अच्छे से, बिकॉज 40% चीज़ें 40-50% चीज़ें तो वहीं पे समझ जाती है। एंड व्हाट यू कुड डू इज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कल जो लेक्चर होगा ना उसका आज थोड़ा सा गो थ्रू कर कर जाओ। आई कैन अंडरस्टैंड इट कैन बी लिटिल ओवरवेलमिंग फॉर यू इन द बिगनिंग। ओके, anatomy is this, एक्चुअली मुझे इतना anatomy का नॉस्टैल्जिया आ रहा है, इतना anatomy का नॉस्टैल्जिया आ रहा है ना यार। I love anatomy. I love anatomy to the craziest extent. Hey, do you know Chirag Gurbani? He's a batchman. I've heard of him, but I haven't had the chance to interact with him. I am going is not. It's not a good college. In a not so good college, okay. Best way to deal. See, okay, college plays important role, but more than college, what plays important role in during MBBS is your hospital. Okay, so not so good college अगर है ना तो make yourself good, become your own teacher. What you could do, see को professors तो अच्छे हो सकते हैं, एक कोई तो teacher हर subject में रखना, and what you could do is रोज के रोज studies में efforts डालो, ठीक है। एंड कैसे डाल सकते हो तुम लोग, देखो इट्स बेबी स्टेप्स कि जो भी टॉपिक चैप्टर हो रहा है ना, एक ना अपने टीचर से पूछ कर रखने का कि लेआउट कैसा होने वाला है, बिकॉज दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू कि सुपेक्स कितने दिन उन लोगों ने डेडिकेट करने वाले, इनफेक्स के लिए कितने दिन, मन में थोरैक्स के लिए कितने दिन, एंड देन यू कैन फ्रेम योर टाइम टेबल। अब व्हाट आई यूज्ड टू डू ना, मैं वीकेंड्स को बहुत यूटिलाइज करता था मेरे वीक का बैकलॉग कवर अप करने के लिए। हे ड्रॉप न घेता पण ड्रॉप होणार म्हणजे. हां यार, तेच तर दुःख आहे ना, की काय झालंय, टेक्निकली माझं एम-बी-बी-एस संपायला पाहिजे विथ माय इंटर्नशिप इन 2025. बट बिकॉज ऑफ कोविड अँड ऑल दिस थिंग्स माझं एम-बी-बी-एस आता 2026 एंडला संपेल बहुतेक. बिकॉज अँड इंटर्नशिप तर करावी सगळ्या गव्हर्नमेंटचे बॉन्ड्स तर फुलफिल करावेच लागतील. ओके, फॅन्टसी वन मेथड टू स्टडी एनाटॉमी. ओके, समबडी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. आई वाज वेटिंग फॉर दिस वन. ओके, सो सबसे पहली मेथड, ओके, एनाटॉमी पढ़ने की, कि अनाटमी बहुत प्रैक्टिकली ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, सिर्फ टेक्स्ट बुक लेकर बैठोगे कुछ नहीं होने वाला। गेट योर सेल्फ अ बोन सेट, get your like subscribe to some good YouTube channel, like you can subscribe to me because I am planning to come up with a lot of content for anatomy. वही content पर मैं work कर रहा था पिछले कुछ दिनों में, and also there are other good YouTubers like I can tell you Sam Webster. Sam Webster को पहले देखना करो, Sam Webster के videos ना काफी fundamental level पर oriented होते हैं. He goes from very basic to like high levels. Okay, so that is Sam Webster के videos देखो. After then that there is one channel called as Viva Voice of Anatomy. Then there is a channel called as by Dr. Mitesh Dave, and there is another channel I don't remember, Viren Karia. Yeah, so those channels are good for those are Indian YouTubers, like they are anatomy teachers, and their channel is really good. And तुम लोग जब तुम्हें कल तुम्हें जाना है वो कॉलेज में वो लेक्चर है, तो what you could do is you can study little things today. एक रफ आइडिया लेकर जाओ लेक्चर की, लेक्चर अच्छे से अटेंड करो। अगर टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है तो इफ टीचर इज जस्ट डूइंग टाइम पास, मतलब जस्ट पीपीटी पढ़ रहा है, देन you could just do something more productive during that lecture, तो वो करो। And next thing, dissection classes. Please don't miss dissection classes because dissection classes are very crucial when it comes to your anatomy. And dissection classes में तुम क्या कर सकते हो ना कि तुम अगर dissection के dissector purchase करो, themes dissector is better according to me. You can check out the video I have made about books to use in first year MBBS. That is a good video. Then bro, I don't feel like to give Neet this year also. Bro, you can't do anything. See, if you want to achieve a particular like Neet is the only door, at least in India, you can get into medical school. So if you want to achieve, and if you're really serious about medicine, then I just think that you should leave everything aside, and for now you should channelize all your energy towards the exam.
What was a Neet score and Neet rank, and which attempt was it clear? I don't exactly remember Neet rank now, but my it was my first attempt, and I had a 600 plus score, around 610. So that was what my Neet score was. Okay. Why the Mumbai government college fees are so high? I don't know, yaar. Even I wonder कि in JJKM the fees is around 1 lakh, 1 lakh 10,000. So I don't know why, but I don't know. It's like the fees are always decided by the government. I don't know. बट अगर तुम लोग प्राइवेट कॉलेजेस में देखना चाहो तो कहीं ज़्यादा है उससे, तो मतलब प्राइवेट कॉलेजेस का जितना तो जितना गवर्नमेंट कॉलेज का 4 साल का फी होती है तो प्राइवेट कॉलेज की 1 साल की फी है. हाउ टू ओवरकम फिजिक्स. ओके, फिजिक्स के फियर को ओवरकम कैसे करते हैं? तो फिजिक्स के फियर को ओवरकम करने के लिए द बेस्ट मेथड वुड बी टू एक्चुअली फेस इट. फाइंड अ गुड यूट्यूबर, आई विल टेल यू, और फाइंड अ गुड टीचर इन रियल लाइफ. यूट्यूब जहाँ पे भी मिल रहा है ढूंढो. एंड स्टार्ट फिजिक्स फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर. ठीक है. एंड क्या करो कि यूनिट्स है, देखो जैसे मैकेनिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, तो टारगेट द यूनिट्स एंड डेडिकेट अमाउंट ऑफ डेज फॉर देम. जैसे कि मैकेनिक्स में अप्रॉक्सिमेटली 15 to 16 चैप्टर्स है, तो यू को डेडिकेट लाइक अ मंथ टू मैकेनिक्स इटसेल्फ, कि 2 दिन में एक चैप्टर करना ही करना है. एंड आई गेस यूएसएस इज अ वेरी गुड बुक फॉर फिजिक्स. भले लेंथी है, सारे क्वेश्चन सॉल्व मत करो, ऑल्टरनेट क्वेश्चन सॉल्व करो, बट येस यूएसएस इज अ गुड बुक एंड सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. एंड रोज सुबह फॉर्मूला लिस्ट पढ़ो. How to make backlogs. Why would you want to make backlogs? Backlogs, okay, I mean, I think you mean to say that how to clear backlog. Then weekend is the best day. Weekend कोई considerable amount, जैसे मैं संडे होता था ना मुझे छुट्टी, तो मैं क्या करता था, मॉर्निंग का टाइम थोड़ा मैं पढ़ लेता था, एंड आफ्टरनून के बाद आई टू टाइम पास ऑन संडे. ओंकार माने बाकीच्या जीएमसीचा व्हिडिओ बनवून की दादा. ओके, बाकीच्या जीएमसीचा मग मला डेफिनेटली बनवायचा व्हिडिओ, बट पहिली गोष्ट काय आहे ना, की जर मला माझ्या युट्यूब चॅनलबद्दल बोलायचं आहे, राईट, then I need to have a considerable subscriber base. I'll be very honest with you guys over here, okay? Till now, my subscriber base is somewhere around 4,000 subscribers. So if I see, I don't like, people don't see this channel as a very big channel, nor do a lot of people know about it. Once I get a good amount of subscriber base, I will of course start making videos about other GMCs. मलाही बनवायला नक्की आवडेल. प्रश्न असा होतो की लाईक तेवढा सबस्क्रायबर बेस नाहीये, आणि लाईक आय एम लिटरली ट्राईंग लॉट ऑफ डिफरंट काइंड्स ऑफ कॉन्टेंट. म्हणजे मी एक सिरीज सुरू करणार आहे, चाय पे चर्चा विथ डिस्कसिंग अ स्पेशलिटी, असं पण माझे प्लॅन आहे. सो लेट्स सी हाऊ दॅट गोज अबाउट. जिथे मी माझ्या कॉलेजच्या डॉक्टर्सला घेऊन मी त्यांच्याबरोबर एक एक सेशन करणार आहे, की ही स्पेशलिटी कशी आहे, ती स्पेशलिटी कशी आहे. टेल मी जर तुम्हाला ही आयडिया चांगली वाटते तर ऑल्सो तर त्याच्यामध्ये तर बरंच कव्हर होईलच. अँड इफ लाईक आय डू वॉन्ट टू मेक content. Why I'm wearing this, I don't know. I do want to make content about other colleges also. Yeah, so that is one thing back of my mind. I will surely do that. I understand physics and physical chemistry, but have a problem with organic and inorganic. Organic is a more understanding oriented thing, right? So what you could do for organic is, understand the things, make good concise notes, and keep on revising them again and again. And for inorganic, NCRT is the only way out, and that's the best option, I feel. Okay. उसके बाद में हाउ टू मेमोराइज होल बायो, आई मीन रिविजन. ओके, ओके, द बेस्ट way to revise bio is reading NCERT again and again. So I have a friend of mine, Himanshi Jain, whom I'm guiding for biology. So what advice I always give her is to solve MCQs and to read the chapters again and again and again. Don't fall into the trap of making notes for biology, because it's not a lot, like it's not high yielding, because NCERT पूरी important है. Okay, Leonardo DiCaprio, you were joined to any coaching during NEET preparation? Okay, I joined a coaching in the initial part of my NEET preparation, but बाद में ऐसा हुआ ना कि वो कोचिंग में अच्छा पढ़ा नहीं रहे थे, तो मैंने खुद से करने को स्टार्ट कर दिया. एंड 11th के बाद तुम लोग बोल सकते हो मैंने कोचिंग छोड़ ही दिया था. इज कम्युनिटी मेडिसिन अटेंडेंस इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट ईयर? आई एम फ्रॉम सायन. No, community medicine attendance is not important, but I will tell you, you will have an internal exam for community medicine. कम्युनिटी मेडिसिन को ना कब सीरियसली लेना स्टार्ट करो, व्हेन सेकंड ईयर में तुम्हें पोस्टिंग्स लगेगी कम्युनिटी मेडिसिन के. हमारी तो फर्स्ट कम्युनिटी मेडिसिन की एग्जाम भी ऑनलाइन हुई थी, सो दैट वाज नॉट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. बट करो थोड़े बहुत लेक्चर्स, हमें 4-5 लेक्चर्स थे, मैंने उनमें से 1-2 स्किप किए थे. स्टेट कोटा में कितने मार्क्स चाहिए एनटी के लिए? यार मैंने ना कट ऑफ के सारे वीडियोस बना कर रखे, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो यार तुम लोग. मैं बना कर रखे यार, तुम लोग तो भी हो तो मुझे जाकर पूछ लो, ठीक है, आई डोंट माइंड आंसरिंग. बट ना इतना हर कैटेगरी का मुझे याद नहीं रहता कट ऑफ. तो आई गेस एनटी, अभी एनटी में भी बहुत सारे हैं ना, A B C, तो ठीक है, आई विल ओके, चलो मैं बता ही देता हूँ, छोड़ो, अभी तो इतना पूछा है तो आई विल टेल, बिकॉज दैट विल बी वेरी रूड इफ आई रीड अ क्वेश्चन एंड आई डोंट आंसर इट. वेट, होल्ड ऑन, मुझे मेरा वीडियो खोलना पड़ने वाला है, सो दैट्स वेयर आई एम, लाइक द सोर्स इज माय वीडियो ओनली, जहाँ से मैं बता रहा हूँ. ओके, अभी एडवर्टाइज आ रही है. ओके, एमबीबीएस की पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी तो मस्त चल रही है. अभी तो मेरी आज ही तो एग्जाम्स फर्स्ट ईयर की खत्म हुई है.
सो अभी तो फिलहाल मेरी पढ़ाई ओके हाँ, तो मैं एनटी कौन से पूछा था मुझे, एनटी के, नो आई डोंट नो व्हाट इज एनटी के, बट मैं बताता हूँ। बीजेएमसी के लिए ना एनटी बी का था 558, एनटी सी was 611 एंड एनटी डी was 628। तो वो डिपेंड करता है कौन से एनटी को बिलोंग करते हो। एनटी ए का नॉर्मली कम जाता है कट ऑफ, तो यू कुड कीप अ टारगेट ऑफ 570, ओके, एंड बाकी एनटी के लिए यू हैव टू कीप अ टारगेट ऑफ 620, ओके। मंदा सावंत, सगळी म्हणतात फिजिओलॉजी समजतं पण लिहिता येत नाही असं का? ओके, हे मला खूप मला हवा होता. तुम्हाला पण एक गोष्ट बघायची आहे का? 2 मिनिटं होल्ड करा, मी 2 मिनिटात घेऊन आलो ती गोष्ट. होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, ओके. So to answer Mandar Samant, I got some of my real physiology stuff. Okay. So Mandar, physiology normally आपण रेफर करतो ना या बुक मधून, विच इज गायटेन अँड हॉल, बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, ओके. तर प्रश्न असा होतो ना की या बुक मधून, इस बुक में से आंसर लिखना, आई स्पीक इन हिंदी सो दैट यू नो मल्टीपल पीपल कैन अंडरस्टैंड. इस बुक में से आंसर लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज दिस इज एन कॉन्सेप्ट बेस्ड बुक. बट you need to refer a parallel preparation manual for your exam purpose. So like this is VD Joshi, this is really good preparation manual. आणि मी एक गोष्ट केली होती ती मला तुम्हाला कोणा सांगायचं खरंच सांगावं वाटतं. दॅट वॉज की ना मी एक क्वेश्चन आन्सर्सची बुक बनवून ठेवली होती फिजिओलॉजीला, ठीक आहे. सो नाव इफ हॅव टू शो यू दिस आन्सर, ओके, कॅन यू सी, आय डोंट नो दिसतंय की नाही, ओके. प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल. सो मी प्रॉपर्टीज एनलिस्ट करून ठेवल्यात आणि प्रत्येक प्रॉपर्टीला एका 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 लाईनमध्ये डिस्क्राईब केलंय. सो दिस इज हाऊ यू कॅन यू नो मेक नोट्स फॉर फिजियोलॉजी, क्वेश्चन आंसर नोट्स, व्हाट यू कैन रेफर लेटर. एंड इसका ये एडवांटेज होता है ना कि तुम्हें पता है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू अ आंसर दैट इज फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, सो उसके फंक्शंस लाइक इफ आई स्टार्ट राइटिंग ना, आई कैन राइट 10 पेजेस ऑन इट. बट ऐसा होता है कि वो याद नहीं आते बिकॉज ना रैंडम मतलब थोड़े अलग अलग फंक्शन है, कई एक जगह पर बोन्स के साथ फंक्शन है, एक उसका मेटाबॉलिज्म का फंक्शन है. तो व्हाट यू कुड डू इज मेक हेडिंग्स ना, मतलब एक उसको आंसर का फॉर्मेट फ्रेम कर रखो. तो तेच रीजन है कि फिजियोलॉजी इज मोर वास्ट. इफ हैव टू टेल यू व्हाट इज मोर वास्ट, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, देन एनाटॉमी इज बाउंडेड, ओके. एनाटॉमी कैसे बाउंडेड है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टडिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर like cubital fossa, तो you will study its boundaries, contents, you know, you will trace the contents, you will study the relations. आंसर वहाँ पे खत्म हो जाता है. There is a particular format. But physiology answers do not have a very structured format, so you need to make your notes for that, you know, like जैसे कि here I have made notes for RBC counts. This is a answer for erythropoiesis. So erythropoiesis के आंसर को मैंने शॉर्ट में क्रिस्प फॉर्म में मैंने एक फ्लोचार्ट फॉर्म में मैंने कैसे कर रखा है. इधर मैंने पूरा एरिथ्रोपोइसिस का स्टेप लिखा है, यहाँ पे मैंने साइज लिखा है, और यहाँ पे मैंने इतने से पार्ट में उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड उसके ये लिख कर रखे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं सेल में ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस. ओके, लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव कम. योर ओपिनियन ऑन मेडिकल कॉलेजेस वर्सेस एम्स नागपुर. सी मुंबई कॉलेजेस वर्सेस, आई हैव मेड माय ओपिनियन वेरी क्लियर. मुझे कभी भी लगता है कि मुंबई के कॉलेजेस बेटर है. नॉट दैट एम्स नागपुर इज बैड, बट आई नो एम्स की फैसिलिटीज अभी बहुत रेडिकली इंप्रूव हो रहे हैं. बट ऑल्सो द थिंग अबाउट एम्स नागपुर इज दैट यू नो I would want to go for the ones which are more tried and tested. So I would still recommend Mumbai Medical College. I'm being very clear about this. But AIIMS Nagpur is a good college. And if you are from Virar, okay, so Virar ka rest na. So for a college is really great. विरार में किधर नीट कॉर्नर, ओके. एचएससी में कितने परसेंट आना चाहिए एससी कैटेगरी को जीएमसी के लिए. एचएससी का कुछ लेना देना है ही नहीं ना, मतलब परसेंटेज का कि कितने आना चाहिए, कितने आने चाहिए, कितने नहीं आने चाहिए. इट्स अप टू यू कि हाउ मच डू यू गेट. लाइक यस, लाइक आई स्कोर्ड 90% इन माय एचएससी बट कुछ हुआ नहीं उससे. सो तुम्हारे ऊपर है. बट आई वुड से गेटिंग अ डिस्टिंक्शन इज अ गुड थिंग इन 12th स्टैंडर्ड. हाउ इज द क्लाइमेट इन मुंबई फॉर स्टडिंग. Climate in Mumbai is always hot and humid except in monsoons when it is raining. But climate तो अच्छा ही है. मतलब I don't know how is that, but okay, it's not like very adverse climate except in the month of April and May. But I don't know, this year surprisingly March was more hot than April. I don't know.
how to do continuous revision. For example, sometimes you forget a previous chapter, but I'll tell you now, make a make a revision strategy. Also, one way could be to teach somebody. Okay, तो वो भी थोड़ा आपको ज़्यादा जल्दी consolidate हो जाता है. To learn it from the most practical ways. For example, if you're learning anatomy, study it from dissections. If you're learning some cycle of biochemistry, stick it in your room. Okay, revise it every day. Biochemistry के लिए तो revision is the best thing. भैया love from GMC Akola. Thank you. Hey, GMC Akola, na, I wanted to tell you one thing. Most of my teachers, many of my teachers are from GMC Akola. And no, I guess Prajakta ma'am from anatomy department in a college is from GMC Akola. Like, you revision. Okay, how many hours do you study? How many hours do I study? It varies. Like, जैसे कि मेरे अभी एग्जाम्स चालू थे, I was studying 10 to 12 hours every day. I had to study because मेरे एग्जाम्स चालू थे. But on an average, if you're asking me when my college is on, so I would suggest 2 3 hours, 3 hours every day. मतलब मैं I used to come home from college and study for 3 hours, 2 to 3 hours. Yeah, bare minimum तो मैं करता ही था, कुछ ना कुछ तो करता था. रोनी हॉलिक, आय एम फ्रॉम अकोला टू. ओके, दॅट्स ग्रेट. तू हॉस्टेलला राहतोस का? मी मला हॉस्टेलची रूम अलॉट झाली आहे, पण आता माझं फर्स्ट इयर संपलं, सो टेक्निकली म्हणजे हॉस्टेलचं टेन्युअर संपलंय, राईट. आणि सध्या मी हॉस्टेल राहत नाही बिकॉज माझे एक्झाम्स झालेत, मला कॉलेज सुरू नाही झालं माझं सेकंड इयरचं. दादा एस सीचा कट ऑफ किती आहे जीएमसी मुंबईचा? प्रीती सूर्यवंशी. सो ना प्रीती मी व्हिडिओ बनवून ठेवलाय जीएमसी मुंबईच्या कट ऑफचा, तर तो एकदा जस्ट चेक कर. पण मी सांगेन की एस सीचा कट ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 560 पर्यंत असेल, तरी एकदा तो व्हिडिओ चेक कर. युअर फ्युचर प्लॅन्स, पीजी और यूएसएमएली ऑफ लॅब, विच इज युअर ड्रीम ब्रांच? Okay, so PG, of course, I want to do my post graduation, but in India or abroad. Mostly, I'll go for abroad. Let's see. I'm like, fingers crossed. But India is always an option. So I don't have like a great deal of idea about this. Where am I exactly going to do? But yeah, I'm just discovering more about USMLE and PLAB so as to plan my career. Let's see. I'm just talking to more people. I'm watching more people on YouTube. What is Keshav Nagar? Okay, I guess you guys are having some discussion amongst yourself. नाही नाही तू हॉस्टेलला राहतोस का? असं नाही, असं आत्ता मी नाही राहते करंटली हॉस्टेलला, आणि बहुतेक मी सेकंड इयरमध्ये हॉस्टेल सोडेन बिकॉज त्याचे लिव्हिंग कंडिशन्स इतके चांगले नाहीत. मी आणि माझा फ्रेंड आहे ना मेय, वी आर प्लॅनिंग टू लाईक टेक अ रूम नियर बाय द कॉलेज. युजली पॅन्डेमिकच्या आधी अकॅडमिक सेशन कोणत्या मंथमध्ये चालू व्हायचा? पॅन्डेमिकच्या अगोदर ना जी तुमची नीट असायची ती मेमध्ये व्हायची. ऑगस्टमध्ये अकॅडमिक सेशन सुरू होऊन जायचा आणि मेमध्ये युनिव्हर्सिटी एक्झाम असायची, कमिंग मेमध्ये. येस, फर्स्ट इयरचं सांगतोय मी. जीएमसीमध्ये बॉन्ड आहे का? प्रत्येक मेडिकल कॉलेजला बॉन्ड आहे, तुम्ही कुठे जा, बिकॉज एव्हरी मेडिकल कॉलेज फॉल्स अंडर द गव्हर्नमेंट, सो कुठेही जा बॉन्ड आहेच. भाई, how to avoid procrastination? Best way to avoid procrastination, even I'm telling this to myself, make a timetable. Timetable banao, and give yourself the guilt if you don't do a thing. Also reward yourself and punish yourself अगर तुमने एक चीज नहीं की तो. फिजिक्स के क्वेश्चंस कितने सॉल्व करे पर चैप्टर? आई वुड सजेस्ट 200 क्वेश्चंस का टारगेट रखो अगर तुम अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. अगर तुम ये साल के नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू हैव लाइक बेयरली एनी टाइम लेफ्ट. तो अगर 100 क्वेश्चन भी होते तो भी बहुत बड़ी बात है. I'm preparing for NEET first drop. Oh, that's good. All the best for your NEET exams and prepare well. Please tell something about GMC Mumbai hostel. I told you na, अपना boys hostel and गर्ल्स हॉस्टल अच्छा है. गर्ल्स हॉस्टल की कंडीशन कंपैरेटिवली अच्छे है, बट अपना आर एम भट्ट के कंडीशन सबसे अच्छे है. इफ यू गेट आर एम भट्ट हॉस्टल इन थर्ड ईयर देन इट्स रियली गुड थिंग, यू शुड गो फॉर इट. अपना बॉयज हॉस्टल कंडीशन से लाइक ओके. इट डिपेंड्स एक्चुअली ऑन विच फ्लोर यू गेट अलॉटेड, बिकॉज फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर की कंडीशन थोड़े से खराब है, बाकी फ्लोर की ठीक है. ओल्ड बॉयज हॉस्टल की कंडीशन आर नॉट गुड, बट आई वुड सजेस्ट कि स्टडीज के लिए ओल्ड बॉयज हॉस्टल इज बेटर देन अदर हॉस्टल्स, बिकॉज आई पर्सनली स्टेड दैट. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द कट ऑफ अ जनरल कैटेगरी इन नीट? इट डिपेंड्स यार, मतलब जो मैंने पिछले साल का कट ऑफ बताया उससे तुम लोग +20 -20 पकड़ कर चलो. समथिंग अबाउट योर फ्रेंड्स इन कॉलेज, एनी स्पेशल मेमोरीज विद देम? अ लॉट मेनी स्पेशल मेमोरीज. ए दिस इज आनंदिता के. ओके, हाय आनंदिता. सो लाइक स्पेशल मेमोरीज, लाइक आई टेल यू टुडे ओनली. आज आज मेरा फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल था ना, तो वी हैव टू पिक अ चिट, राइट, फॉर द टेबल. तो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के लिए मुझे आया था इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, जहाँ पे जस्ट मुझे ग्राफ दिया था एंड मुझे वो इंटरप्रेट करना था ग्राफ को. एंड माई ग्राफ वाज अल्फा ब्लॉक. एंड पता नहीं प्रज्वल इतना अनलकी क्यों हो जाता है. प्रज्वल पिक्ड अ चिट जिसके अंदर उसका टेबल नंबर 4 था, मेरा टेबल नंबर 5 था. एंड ही पिक्ड अ चिट वाज व्हाट वाज पेरीमेट्री. तो ऐसी बात हुई ना कि इन दैट पेरीमेट्री का प्रैक्टिकल, आई डोंट नो वो बेचारे पर क्यों ऐसी चीज़ें आती है. इवन फॉर बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल
हम सबको केसेस थोड़े से डिसेंट आते हैं. लाइक आई हैड अ केस ऑफ डायबिटीज मेलिटस, देन माय फ्रेंड लाइक द पर्सन बिफोर मी, दैट कृतिका त्यागी, शी हैड अ केस, आई गेस आई डोंट रिमेंबर, शी आल्सो हैड लाइक अ जॉन्डिस का केस. एंड उसको या ओरोटिक एसिड यूरिया, उसको हर बार से दुनिया की अलग ही चीजें आती है. बट सो दैट्स वन मेमोरी व्हाट आई मेड विद ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स. तो वही मतलब उसको पेरीमेट्री में थोड़ा सा मैंने हेल्प किया, बिकॉज पेरीमेट्री इज अ डिफिकल्ट प्रैक्टिकल, यू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, बिकॉज आई वॉज ए सब्जेक्ट बाय द वे, इसीलिए मतलब वो अलाउड रहता है सब्जेक्ट को थोड़ा हेल्प करना. Is it easy to manage studies while your passions and hobbies in GMC? Do you get enough time? Of course it is easy. Like it's not easy to manage. It depends on how consistent you are. जैसे कि अभी देखा चलो YouTube चैनल मेरी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, and also मेरे स्टडीज का लोड है, but I don't give up on my channel because I believe कि जितने भी लोग हैं आज अभी भी जितने लोग interact कर रहे हो मेरे साथ, you know, I really value you guys. And मेरे लिए ना म्यूजिक बोलो या फिर यूट्यूब बोलो या फिर लिखना बोलो, इसमें पैशन. तो उसको ऐसा होता है कि अगर मैं वो नहीं करूँ ना तो आई डोंट फील कंप्लीट विद इन माई सेल्फ. सो what I would say कि yes, it is little difficult especially during exam times and other times, but other time it's great यार. मतलब अच्छा लगता है, you know, it's really a refreshing change. Like जैसे कि अभी लाइव में कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है. Like it's been almost 30 minutes since we are live. Okay, your duty in, I didn't understand this question. Your duty in, okay. How was life as a NEET aspirant versus MBBS student? Okay, there's a lot of difference. पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि MBBS में अगर थोड़ी स्टेबिलिटी हो जाती है कि अगले 4-5 साल तुम्हें कोई एंट्रेंस एग्जाम देनी नहीं है, यू आर नॉट रनिंग बिहाइंड एनी सीट in any college. So that's one thing about MBBS life. Second thing about MBBS life, what I really love is the studies part and the hospital part and the memories part. You know, you really feel like a grown up when you're into MBBS because you're not no more regarded like a child. You have certain sense of responsibilities over you and अच्छा लगता है. मीटअप कधी करणार अरे हो तर दे तिथे सबस्क्रायबर्स. जर मी आज मीटअप ठेवलं तर लोक खरंच येणार आहेत का? टेल मी ऑनेस्टली. लाईव्ह वरतीच लोक 4,000 सबस्क्रायबर काउंट आहे आपला, त्यात 22 लोक लाईव्ह वरती जॉईन होतात. जर मीटअप केलं तर बेअर मिनिमम 10 लोक तरी आली पाहिजेत यार. ओके, आय डोंट माइंड कीपिंग अ मीटअप, बट टेल मी इफ यू गाइस वांट टू हैव अ मीटअप, यू नो, मतलब बट इट डिपेंड्स. लाइक मीटअप विल रिक्वायर एक्चुअल प्लेस, तो ठीक है, और थोड़े अपनी चैनल बढ़ जाए, we become a family of more subscribers, then surely, you know, I have a lot of plans for this channel. Okay, is there any cultural fest in GMC this year? Of course there will be. अभी तो सीधे हम लोग के एग्जाम्स चालू थे ना, तो अभी तो हर फेस्ट होगा ये सारा, आई थिंक, बिकॉज ये साल कोविड के सारे जो ये थे वो भी थोड़े से रिलैक्स कर दिए रूल्स वगैरह. सो आई गेस कॉलेज लाइफ एंड फेस्ट, yes of course. Fest मैंने personally अब तक experience नहीं किया है, I'm being very honest, but what I've heard from my seniors is because last year I joined the college in February and Fest just January में खत्म हो गए थे. So okay, you're from rich family or from middle class family, job of parents? See, being very honest, so my family currently now I'm like in a well-to-do condition, but a few years ago when my sisters were also learning and all of that, we were a middle class family, and abhi bhi we are middle class family only. I travel by public transport, and like that's how I describe middle class, you know, like people who travel by public transport, people जिनको हर जगह cab और Starbucks नहीं चाहिए होता है. Okay, anyways, no offense to anybody. So my parents का job, my mom is a teacher by profession and my dad is like मेरे पापा का business है, he's into tax consultancy and LIC consultant and you know like जो भी investments वगैरह होते हैं उसके लिए consultant है my dad. Yes, and my sister, she's a physiotherapist. My younger sister, my elder sister, she's an engineer. BGMC Pune is a great college. Indeed, BGMC Pune is a great college. You know, my sister had a postings at BGMC Pune, so she really told like it's good. How is COVID in Mumbai? They're saying now that COVID के cases थोड़े बढ़ गए मुंबई में. I'm not sure though. Okay, stipend for students. How much do they get? Stipend for students. Students don't get any such stipend in India at least. Once you get into internship का stipend है कुछ तो 14-15,000 per month. पीजी साठी काही प्लॅन्स आहेत का? हो, पीजी साठी प्लॅन्स तर डेफिनेटली आहेत. आय एम सर्चिंग अबाउट प्लॅब अँड USMLE आणि MRCS वगैरे त्या एक्झाम्स बद्दल मी वाचतोय. लेट्स सी. आय एम जस्ट होपिंग की नीट पीजी तर द्यावीच लागणार ऑफकोर्स, बिकॉज आता ती लायसन्सिंग एक्झाम इंडियाची. सो आय एम जस्ट ऑल्सो पॅरलली डिस्कवरिंग दी अदर एक्झाम्स. मग त्याचा तो एक प्लॅन आहे माझा, पण ते बघावं लागेल ना, बिकॉज इट्स लाईक की गोईंग अब्रॉड इज नॉट अ इजी थिंग. सी गोइंग, आई टेल यू, गोइंग यूके इज इजी बिकॉज यूके का एग्जाम का खर्च इतना ज़्यादा नहीं है, बट यूएस के एग्जाम का खर्च बहुत ज़्यादा है. USMLE इज अ वेरी एक्सपेंसिव एग्जाम. If somebody knows, like anybody from the US Medical Council or if somebody knows Joe Biden, please tell him कि USMLE का खर्च थोड़ा कम करे. Jokes apart.
दादा फर्स्ट इयर ला ठाणे डिस्ट्रिक्टच्या स्टुडंट्सला हॉस्टेल भेटेल का? बघ डिफिकल्ट आहे करंटली. जर आता यावर्षीच्या मुलांना ओल्ड बॉयज हॉस्टेलमध्ये अकोमोडेट केलं, बट डिपेंड्स अगेन अवेलेबिलिटी चेंज होत राहते. बट इन द कोर्स ऑफ द इयर यू विल गेट. I love BGMC Pune. That's a great thing. A lot of BGMC Pune lovers over here. Good. Your favorite Taylor Swift album? Oh, this is like currently to I want to say Red, but I can't deny the fact that I love folklore so much. So folklore currently folklore, but that keeps on changing for me. But Red मेरा बहुत constant है. Red and folklore. Can every student do dissection? Of course, if you're into MBBS and first year MBBS or any other medical course, you have to do dissection. कुठला आहेस आदर्श? अच्छा त्याला विचारले. ओके, वी आर एंजॉयिंग दिस, होप यू डू दिस सेशन लाइक दिस रेगुलरली. आई वांट टू डू दीस सेशंस रेगुलरली यार, बट ना बात क्या हो जाती है पता? देखो, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, अगर मैं कट ऑफ का वीडियो बनाऊँ दैट गेट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स. बट इफ आई मेक अ वीडियो लाइक talking, being candid and all, that does not get that response. That does not get that much response. So that's a bit discouraging. But anyways, मैं करूँगा. अगर if you want more live sessions, put them in the comment sections, and we will do live session. We will do one live session every 1-2 months. I guess I told you in January also कि हम लोग 2-3 मंथ में एक बार एक लाइव सेशन किया करेंगे. Do you watch movies? Yes, I do watch movies. Like the last movie I watched a movie with my mom called Chit Chor. It's by Amul Palekar. It's a good movie. It's an old movie. थोड़ा सा है but ठीक है. Um, how is food and all in the mess? Mess तो नहीं है JJ में, but there's a canteen out of which I will say now I'll honestly rate the canteen. सबसे अच्छा PG हॉस्टल का कैंटीन है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट्स का डॉक्टर्स कैंटीन का खाना सबसे अच्छा. सेकंड आई वुड गिव, एंड डॉक्टर्स कैंटीन में चाइनीज वगैरह तुम लोग ट्राई कर सकते हो. So if ever you come to JJ and you want to try a canteen, I'm just rating them for your. Second, if you want to try Indian food, then you can try in the Central Canteen. It is good. Girls Canteen की चिकन तंदूरी चिकन बिरयानी बहुत अच्छी है. एंड इसकी भी चिकन बिरयानी अच्छी है. चिकन थाली ट्राई करना, या फिर वेज थाली ट्राई करना, या फिर चाइनीज वेज. देखो चाइनीज ट्राई कर रहे हो तो वेज चाइनीज ट्राई करो. इट शुड आई मेक लाइक अ जेजे के कैंटीन का व्हाट यू कॉल दैट मुकबंग और समथिंग विद माय फ्रेंड्स. आई एम प्लानिंग कि सारा खाना ऑर्डर करेंगे जेजे के कैंटीन से, एंड वील मेक लाइक अ वीडियो. कैन आई मैनेज एमएच बोर्ड एंड नीट साइमल्टेनियसली? यस यू कैन ऑफ कोर्स. मैंने जैसे ऑल्सो किसी ने तो पहले भी क्वेश्चन पूछा था, सॉरी मैं आंसर करना भूल गया. आई वाज फ्रॉम स्टेट बोर्ड. डू यू वॉच मूवीज, टीवी सीरियल? एंड टीवी सीरियल तो नहीं करेंटली, बट माय फेवरेट शो इफ यू आस्क मी देन इट इज द गुड डॉक्टर. इट्स द रियली ग्रेट शो, मस्त है. देखो डॉक्टर शॉन मर्फी की स्टोरी. इट इज एन ऑटिस्ट, इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ऑटिस्टिक डॉक्टर, एंड दे हैव showed multiple characters in that, and the characters are portrayed very well. My favorite character in that show is Dr. Audrey Lim, which is played by Christina Yang. Okay. नीट इज इजी, डिपेंड्स यार. अरे मैं एक ही, मुझे ना मतलब मैं लियोनार्डो के क्वेश्चन देने का आंसर करो. यस ऑफ कोर्स. ओके, हाउ टू फोकस टू अचीव दिस? ओके, व्हाट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट अचीव. मधुरिमा बैनर्जी, हाय मधुरिमा. आयुषी खराती, yes. Madhurima, hello Madhurima. Is there gym in college? Yes, JJ has a gym in the in the underground part of the like underground area जो है ये कैंटीन का, सॉरी कैंटीन ही बोल रहा हूँ, ये अपना बॉयज हॉस्टल का वहाँ पे जिम है. ऑल्सो बहुत अच्छा जेजे का जिम खाना है विच इज इन मरीन लाइन्स. अभी पता नहीं, अभी हम लोग ने भी कभी विजिट नहीं किया, बट अभी फेस्ट वेस्ट होंगे तो मरीन ड्राइव पर ही है. हाय अमेय सर, ओ थैंक यू. यशवर्धन बोले हेलो. नाना डेमन स्लेयर ॲनिमे बघेन नक्की. मला खूप लोक ॲनिमे रेकमेंड करतात, जसं की माझा स्वतःचा भाऊ ना, ही इज अ बिग नरुटो फॅन. From where are you? Okay, I'm from Mumbai. Like I'm born and brought up in Mumbai. But if you're asking me where am I native to, so I'm native to Satara. And मेरे पापा गाँव गए हैं, so he's going to come back today or tomorrow. Okay, Gauri, hi Gauri. Okay, hi Dr. Amir Girdikar. अरे coming to JJ next year. दिल खुश कर दिया. Thank you. Hopefully you get JJ next year, and I wish you all the best. And see you in JJ then. Madhurima Banerjee, physics questions are moderate or hard in NEET? I would suggest, with comparison to JE level, of course, physics questions are moderate leveled in NEET. I would suggest कि the ideal book ना, जिसको अगर तुम्हें questions की level देखनी है तो solve USS की questions मुझे काफी अच्छे लगते थे. and NEET guide नहीं, हाँ नीट गाइड भी कर सकते हो, या फिर यू कुड डू अ थर्ड बुक लाइक फिंगर टिप्स के थोड़े ज्यादा ही मुझे कभी कभी इजी लगते हैं, बट ठीक है ना. 2020 के पेपर में तो बहुत इजी क्वेश्चंस भी आए ही थे.
Holidays you get or not. We do get holidays, yeah. Any information about girls hostel condition and all? Yeah, girls hostel condition now. I'm planning to make a girls hostel video. I've seriously, I have it in the back of my mind. Don't think I've forgotten it. But बात ऐसी हो रही है ना यार कि ना Nilanjana ma'am, who is the girls hostel, this what happens in a government college, you require a lot of permissions. If you want to shoot or record something, and especially when it is girls college, now you I will of course require. So I'm just planning to speak with one of my female friends if they can give me certain clips. But I don't want to pirate clips and put it down in the video, you know. So girls hostel की condition कैसी है ना, तो देखो वैसे तो लिविंग कंडीशन तो है, मतलब यू कैन लिव देयर एटलीस्ट, वाटर वगैरह अच्छा है, कभी कभी पानी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है बट ठीक है अच्छा है. एंड पीपल देयर आर 2 to 3 गर्ल्स इन ईच रूम. छोटी रूम होगी तो 2 लड़कियां एक रूम में है. लाइक माई मोस्ट ऑफ माई बैचमेट्स आर स्टेइंग विद 2 गर्ल्स इन अ रूम. हाउ वाज द फ्रेशर्स, यू नो. ये चीज़ की बात ना करो, मुझे मेरा दिल बहुत जलता है कि आज वाज द ओनली बैच हू डिड नॉट गेट अ freshers because of this bloody ass COVID. I shouldn't be using these words in life, but कोविड की वजह से हमें फ्रेशर्स नहीं मिली है. बट यू नो, आई एम अ गुड सीनियर. आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट माय जूनियर्स गेट फ्रेशर्स. Okay, Sunday is holiday or not? Only study. Nee, Sunday is a quite relaxed and chilled day. What I do now, Saturday night I study, okay, and Sunday morning also I like study for 3-4 hours and बाकी पूरा दिन फिर time pass. I'm currently doing the MTG, but thanks for your suggestion. Welcome, Madhurima. Okay, how can I stay focused in the last months of my preparation? Last months of my preparation by solving papers, because paper scores are both motivating and both depressing. अगर अच्छा score आता है तो you will feel more motivated to study. But if अच्छा score नहीं आता तो that is your best motivation towards the end to get into your preparation, core preparation. How many hours to study in Neet? It depends from person to person. Sabha Patel, what are your views on caste quota for admission in Neet UG as well as Neet PG? Just a second, I'll switch on the lights. Hold on. Wait. Okay, so my views on caste quota ना, so I honestly feel कि reservation policy जो है वो होनी चाहिए पर थोड़ी modified way में होनी चाहिए. One modification what should be there in the reservation policy is the financial income of the person. If the person is coming from a good family and still taking the advantage of caste, then that shouldn't be happening. But of course, we cannot completely deny the fact that reservation policy is bad, because see, there are ups and downs to it ना. But yes, of course they should add the financial वाला thing जो मैं बोल रहा हूँ ना कि एक अगर if the person is below poverty line of the, if the person की income is not like good, like family income, so they should get some amount of leverage, I feel. um, so like, I read that comment by Gauri, you single? Yes, I am single. Currently, I'm actually full single, and I do not have. I'm so phobic to relationships ना कि मुझे पढ़नी ही नहीं है ये सब चीज़ों में. Okay, so I was talking about the reservation policy, but also at the same time I also feel कि the reservation policy should not be detrimental to the other students who are from the open category and all, because that does tend to happen. See, why I feel reservation policy is essential, because कुछ categories है ना, जैसे ST category वगैरह, वहाँ पे ना अभी भी काफ़ी, मतलब इफ़ यू सी एसटी कैटेगरी इज द स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट. सो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के काफ़ी सारे ट्राइब्स अभी भी गाँव-वाँव में रहते हैं, एंड इवन इफ दे स्टे इन सिटीज दे डोंट बिलोंग टू वेरी वेल टू डू फैमिलीज. बट ऐसे, एंड अगर देखो, अगर एक पर्सन अगर उसको है ना, मतलब उसके पास अगर रिसोर्सेज हैं, इफ ही इज फ्रॉम सम कैटेगरी ना, देन उसे खुद से ही नहीं लेना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं स्कॉलरशिप का खुद से, मैंने स्कॉलरशिप खुद के लिए अप्लाई नहीं किया, दो आई बिलोंग फ्रॉम द एससी कैटेगरी, बट आई डिड नॉट अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स बिकॉज आई नो कि I'm from a good family, and if I can pay my own, like if my family is like my family can pay my own fees, and why to ask the government to refund my fees, you know. Is there any beautiful girl in medical college, or there are just nerds? There are beautiful girls here, of course, and JG is blessed to have so many beautiful girls. Will you help if we are in Gmc? Of course I will help. As a senior, why won't I help? But you know, you'll have to come to me and ask, because how will I find you amongst 250 people? No, but if you will ask, well, of course help. Okay, Aconite. मुझे एकोनेट सुनकर सिस एकोनेटेड याद आ रहा है, जो टीसीए का पार्ट है ना. चलो बताओ, सिस एकोनेटेड, ऑल दोस नर्ड्स आउट देयर, बताओ सिस एकोनेटेड कौन सी स्टेप है टीसीए की. चलो, वन टास्क फॉर यू गाइस. ओके, नीट स्कोर, अरे आई टोल्ड यार, देखो वीडियो पीछे करके देखो, मैंने अभी बताया 610. I believe GMC Mumbai is a central unit. So, is there any difference between other colleges of Mumbai and GMC in terms of study bonds, internship? Okay, see, now there are some minor differences, but fees and all में ज़्यादा difference नहीं, 2-3 thousand का आगे पीछे का रहेगा.
ठीक है. एंड ओके फॉर बॉन्ड, ओके बॉन्ड थोड़ा अलग है, बट अगेन जो अपना ये है ना, बाकी कॉलेजेस जो है, जो ये कॉर्पोरेशन के कॉलेजेस है, वो लोग का भी वही बॉन्ड का सिस्टम है कि 5 years आफ्टर एमबीबीएस यू कैन नॉट गो एनीवेयर आउट. एंड सेकंड बात ये है बॉन्ड की कि यू हैव टू कंप्लीट इंटर्नशिप एंड रूरल सर्विस बॉन्ड. वो तो है ही तीनों बॉन्ड्स. प्लीज टेल हाउ फैसिनेटिंग आर द एमबीबीएस स्टडीज एंड हाउ दे. अरे यार मैं इस पर बता सका, यशवंत बोले यू कैन चेक आउट ऑल माई वीडियोज, आई एम लाइक दे आर वेरी फैसिनेटिंग. Especially anatomy dissections are my love. Like फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स का ब्लॉग देखना, तो यू विल एंजॉय दैट प्रैक्टिकल ब्लॉग. आज ही मैंने इतनी बार प्रिक किया ना. इफ यू कैन सी दिस फिंगर लाइक सीव, इट इज सो परफोरेटेड. Okay. How to avoid stress while preparing? How to avoid stress while preparing by there's one very nice saying what I really swear by is that sweat more in peace to bleed less in war. So that's how you can avoid stress. प्रेपरेशन इतनी अच्छी करो ना और अभी इतनी मेहनत डालो ना एंड पुट योर सेल्फ इनटू दैट कंडीशन एनवायरनमेंट ना फ्रॉम 2 o'clock to 5 o'clock where you sit every day from 2 o'clock to 5 o'clock and solve a neat paper at least in the last few days of your preparation, so that what will happen is you will really get into that habit of solving papers from 2 o'clock to 5 o'clock and re-reviewing your mistakes. तो अगर तुम वैसे कंडीशन में डालकर खुद को करते हो ना रोज, तो तुम लोग को तुम कंडीशन में लग गए रोज एक 2 to 5 पेपर करने में. How to focus on 12 boards and need both of them simultaneously. I have made an exclusive video with my teacher Avinash sir. Madhurima, you can just check that out. That is a very useful video for you how to manage boards and need together. But if I have to tell you in a nutshell, then in a nutshell, I would say that don't treat them separately till 3 months before your NEET exam. जब तुम एक टॉपिक लेती हो करने को, then study that parallelly for boards as well as NEET, and don't rote learn things for boards. At least in the at least in the initial days. बाद में जब जैसे जैसे board exams pass आते, you can do that. Okay. How many hours to sleep? अरे that's a very subjective question. मेरे लिए स्लीप इज नॉट अ वेरी ऑब्सेसिव नीड फॉर मी. सो मुझे तो बस हो जाती है 4-5 घंटे, 5 घंटे की नींद. आई एम गुड टू गो विद 5 hours ऑफ स्लीप. टिल विच डेट should I end the syllabus for 2022? Okay, if you're giving NEET in 2022 and if the exam is in July, so you should at least finish your syllabus 2 to 3 months, minimum 3 months before, 2 to 3 months before your exam. Your age, my age, I just turned 20. अरे तुम लोग ने vlog नहीं देखा यार, कब और मेरे बर्थडे का vlog मैंने बना कर रखा, 20th बर्थडे का vlog. अलीबाग गए थे हम लोग. 17th March, I turned 20 years old. I'm 20 years old currently. Do medicos party as in clubbing specially? Yes, many of my batchmates go clubbing and all of that, but I'm not a person who I'm the person जिसको कॉलेज के बाद घर भागना रहता है, या फिर रूम पर जाकर मुझे मेरा बैग वैग करके सोने का रहता है, या फिर मुझे पढ़ने का रहता है, फिर मुझे मेरे वीडियोस बनाने के रहते हैं, या फिर व्लॉग्स एडिट करने के रहते हैं. तो पीपल गो क्लबिंग, इट्स नॉट लाइक एंड बट ठीक है, मैं नहीं जाता क्लबिंग because that's a personal choice, but you can go clubbing. Many of my batchmates go. Okay. भैया एमबीबीएस लाइफ कैसे है? अरे बहुत मस्त है यार. देखो देयर आर हार्डशिप्स टू इट, बट देयर अगेन it's like a dream coming true for me. Which college should I prefer, TNMC, Nair or Sion? Okay. Personally asking me, then I feel कि Sion ranking वाइज थोड़ा better आता है. But उन दोनों में ना थोड़ी सी वो competition है कि कौन ज़्यादा अच्छा है. नायर से अच्छा I would say Sion is better than Nair because ranking वाइज तो वो ज़्यादा आता है. टॉक 5 minute मराठी. अरे नक्की जयेश शिंदे ने मला सांगितलंय मराठीत बोलायला. सो ज्यांना माहिती नाही की मी महाराष्ट्रीयनच आहे, सो मला मराठी नीट बोलता येतं. Okay, which was your favorite subject for NEET and which is your favorite subject in MBBS? This is an interesting question. Favorite subject in NEET was biology, of course, and favorite subject in MBBS was anatomy. Till now, it is anatomy. Touch wood. I swear by anatomy. Scholarships किती मिळतील एससी कॅटेगरीच्या स्टुडंट्सला? एससी कॅटेगरीच्या स्टुडंट्सला 100% फी रिफंड असते, बट तुम्हाला कॉलेजच्या मागे लागून लागून तुमचे सायन्स आणि कामं करून घ्यावी लागतात. नॉट गेटिंग टाइम फॉर फिजिक्स, हाउ टू मैनेज टू मेक कॉन्सेप्ट क्लियर? डेडिकेट टाइम यार, उसके लिए टाइम की कोई बात है नहीं. जो जस्ट एनालाइज योर डे. इफ यू आर डेडिकेटिंग मोर अमाउंट ऑफ टाइम टू एनी अदर सब्जेक्ट, वर यू इंटरेस्टेड इन टू गेटिंग इन टू मेडिकल, इन टू योर फील्ड योर सेल्फ, और somebody inspired to? This is an interesting question, Sabha. I'll tell you my story. I had a fascination towards medicine from the very beginning. And my sister, she got into physiotherapy, and which is like a medical field, of course, and जिसकी वजह से मुझे ना वो बहुत इंस्पायर करती थी. And currently she is an ortho physiotherapist, so she is my inspiration. Dr. Dhanashri Kirtikar is my inspiration, and another big inspiration for me getting into medicine is Sir Stephen Hawking. Now Sir Stephen Hawking की ना, he was suffering for something called as amyotrophic lateral sclerosis. सो मुझे ऐसे सीरियसली तब से मुझे ज़्यादा न्यूरोलॉजी और इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा. सो
Those are my inspiration, but I really love medicine and मुझे पहले से ही बहुत पसंद था. I feel I did not see myself getting into anything else after my 7th 8th standard. 7th 8th standards I was very oriented. I want to get into medicine. What about scholarships? अरे I told scholarships का ना कि I have made one open category की scholarships का video. Many of you guys are commenting me to make videos on SC category scholarships and OBC वगैरह. वो देखो अभी ये वीडियो का बात क्या है ना कि उसके लिए बहुत कंटेंट गैदर करना पड़ेगा, तो ठीक है, आई विल डू माय वर्क, आई विल डू माय होमवर्क, आई विल figure out different scholarships and I will try and make a video on it. Okay. My bestie's birthday is on 17th of March too. Hey, that's great, Yashwardhan. We are like, we are Yashwardhan. मैं बार बार इसका नाम वैसा है. I feel कि यशवर्धन बोले से यश बोलो यार, ऐसे इंसान को यशवर्धन का पेट निकनेम यश बहुत अच्छा है. Have you ever diverted from your dream? Diverted नहीं बोल सकते, but I also am very sure about one thing, that even if I become a doctor, I do not want to give up on my passions. Okay, I want to stay a YouTuber till the end of my life. I want to continue with my music and my poems and all of that. For those who haven't checked my poems out, you can check my poems out on my Instagram page. Okay, this is my sister. This is my sister, like, who is a doctor, and this is my baby, like my sister's baby. Like इसका बच्चा नहीं, बड़ी वाली बहन का बच्चा है, but these both are my wallpaper. Anyways, so IPL मध्ये फेवरेट टीम कोणती आहे? बेसिकली ना माझा एक फ्रेंड प्रज्वल आणि अमेय, ते दोघे खूप मोठे IPL फॅन्स आहेत. सो माझी फेवरेट टीम तर ऑफकोर्स एक हेच आहे, मुंबई इंडियन्सच आहे. बट मी IPL रेग्युलरली बघत नाही. सॉरी टू ऑल दोज IPL फॅन्स वर डिसअपॉइंटेड नाव. Why you didn't take any aims for tag? Because I did not want aims just for the namesake. Okay, मुझे एम्स टैग के लिए नहीं चाहिए था, मुझे एक्चुअली कॉलेज से चाहिए था जो मुझे अच्छी ट्रेनिंग दे. एंड नॉट दैट एम्स नागपुर इज अ बैड कॉलेज, बट अगेन आई वाज नॉट कंफर्टेबल रिलोकेटिंग टू ऐसा. एंड अब बात हो जाती है कि अगर मैं मेरे स्टेट के बाहर जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं. तो एम्स नागपुर वाज वन ऑफ माई ऑप्शंस, बट दैट वाज माई लास्ट ऑप्शन व्हेन आई डिड चॉइस फिलिंग. ओके, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहे? डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए पहली बात तो इस गैजेट से दूर रहो यार, सीरियसली फ़ोन से दूर रहो. डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आधे उधर ही खत्म हो जाते हैं. व्हाट आई डू इज़ कि ना फ़ोन को एक तो फ्लाइट मोड पर डालो, और अगर लगने वाला है पढ़ाई के लिए तो, वरना तो फ़ोन दूसरे रूम में रख दो. आई कीप माई फ़ोन अंडर द पिलो और समवेयर एंड आई सिट इन माई रूम फॉर स्टडीज़. योर चॉइस GMC ओवर नको लव फ्रॉम नॅशनल. थँक यू जयेश शिंदे. योगेश धालटे, भैया कॉलेज में मस्ती होते. अरे मस्ती तर भरपूर होते, माझे व्लॉग्स बघत नाही का तुम्ही लोक? आणि कसं असतं ना की अनफिल्टर्ड मस्ती पण होते, पण आता परत गोष्ट अशी होऊन जाते की आय कॅनॉट शो यू ऑल द अनफिल्टर्ड थिंग्स ऑन कैमरा ना, बिकॉज एक तो पहली बात तो यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज है. सेकंड थिंग, माय टीचर्स नो माय यूट्यूब चैनल, एंड वो बात नहीं है, सी एवरीबडी हैज फन इन मेडिकल कॉलेज, राइट? I show you all most of the fun, but कुछ चीजें होती है which I'm like which I keep with my friends. I'm sorry to leave video now cause okay, no worries, Yash, all the best for your test series. Anyways, मैं अभी 51 minutes हो चुका है. I'll end the live once we reach 1 hour. Okay, आंसर दे ब्रो. जय शिंदे क्या क्या पूछा है, मैं देख में तो दे क्वेश्चन. I'm eagerly waiting to listen to your songs. Oh, Madhurima, thank you. Even I'm eagerly waiting to record. I have made one recording, I guess. तो कुछ नवी एग्जाम्स हो चुके हैं, सो आई हैव एम्पल ऑफ टाइम टू रिकॉर्ड न्यू सॉन्ग्स. शब्र जयसवार, उसने हंसा 12 1 2 3 4. ओके, क्या आई डोंट नो व्हाई शब्र जयसवार लाफिंग. एनीवेज, भैया कॉलेज में मस्ती होते क्या? अरे सांगितलं ना, होते भरपूर होते. ओके, आणि ना आई एम ऑल्सो प्लॅनिंग, डू यू वॉन्ट टू सी अ वीडियो वेयर आई टॉक अबाउट ऑल द फनी मोमेंट्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर. इनफैक्ट ना लॉकडाउन जब भी था ना, तो हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स थे 2 मंथ के लिए. तभी तो ना, आई डोंट नो हु दिस गाय वाज, स्टिल वी डोंट नो हु दिस गाय वाज. ओनली दैट गाय एंड मे बी 1 or 2 ऑफ हिज फ्रेंड्स माइट बी नोइंग वो कौन था. तो ना वो क्या करता था ना कि वो खुद का, हमारा सिस्को पर वेबएक्स पर होता था ना, तो वो खुद का नाम चेंज करता था, एंड ना वो लेक्चर के बीच में जोर जोर से म्यूजिक लगाता था एंड कुछ भी से फनी फनी चीजें लगाता था. एंड तभी तो गुस्सा आता था, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक अपॉन दैट थिंग, आई लाफ. ओके, डू यू चूज टू गो टू सिनेमा थिएटर वॉचिंग फॉर? नो, आई एम नॉट अ मूवी, आई एम नॉट अ थिएटर पर्सन. आई एम कम्प्लीटली अ पर्सन जो घर पे टीवी पर, यूट्यूब पर या नेटफ्लिक्स पर या इस पर मूवी लगाए एंड घर पे बैठे. दैट्स व्हाई आई वेट फॉर मूवीज टू कम ऑन OTT platforms. Okay, damn, don't be apologetic. I know nowadays not being a cricket fan feels illegal, but it's what it is. We do exist. Same here. Oh, Sabah, somebody with whom I can relate. For all those people who love IPL, okay, I watch IPL, but I only watch the end का matches. जब बोलते हैं ना final teams वगैरह हो जाता है. So, anyways, Sania Sheikh. Hello, Sania. Hi.
Do you go to cinema theaters? Okay, I answered this. Bro, GMC PDF students are किती असेल? PDF साठी ना, PW सॉरी PDF होतं PWD स्टुडंट साठी ना, GMC मुंबई येस आहे. माझ्या कॉलेजमध्ये 2 स्टुडंट्स आहेत जे PWD आहेत. तर ठीक आहे. असं नाही त्यांच्याबरोबर कोणी असं हे नाही करत. लाइक काय असा प्रश्नच नाहीये जे ते आपापल्या कॅलिबरवरती इथे आलंय. एम्स मदुराई टैग के लिए जाए या होम सिटी का कॉलेज लेना चाहिए। देखो एम्स मदुराई भी कितना पुराना आई एम नॉट श्योर, तो अगर कंपेयर करो ना कि सिर्फ टैग के लिए मत जाओ, आई बी वेरी ऑनेस्ट, दैट इज सो स्टूपिड ना एम्स के टैग के लिए सिर्फ जाओ किधर भी, अरे आई डोंट नो यार, why do people, that is that's what needs to change, like just people do things just for name's sake कि मतलब they are not actually passionate about aims, but they want to get into aims for just for that tag. If you're seriously passionate about aims, then get into that. See, I was passionate about my college, that's why I got into JJ. How do you spend your weekends? Weekends I spend singing, thoda about studies. I don't leave my studies aside, and like catching up on phone calls with my sister, and catching up with my sister on phone calls with my sister, with my friends, which I don't have many. I have just 2 or 3 friends. I'm being very honest. I just have 2 to 3 good friends. College के 2 है, एंड बाकी एक दो है, मतलब एक पुराना चाइल्डहुड फ्रेंड है, एंड एक इज आईपैड यूजफुल फॉर मेडिकल स्टूडेंट। मैंने एक वीडियो पूरा शूट कर ही रखा है, आईपैड वर्सेस लैपटॉप फॉर मेडिकल स्टूडेंट। यस, आईपैड यूजफुल है, बट इट अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट योर नीड्स आर। देखो मुझे, आई एम नॉट अ पर्सन इज कंफर्टेबल मेकिंग नोट्स ऑन आईपैड, तो क्या करूँ मैं, वो वीडियो डालूँ कि नहीं डालूँ? देखो मैंने पूरा एक वीडियो शूट कर रखा है आईपैड वर्सेस लैपटॉप का, वो वीडियो डालूँ कि नहीं डालूँ? नोट्स कैन यू प्रोवाइड? यस ऑफ कोर्स, मैंने नोट्स का ना बनाने को स्टार्ट कर भी दिया है। आई जस्ट गिव यू अ ग्लिम्प्स, होल्ड ऑन। किधर गया, रुको जस्ट अ सेकंड ना, 2 मिनट होल्ड करो, जस्ट मैं सर्च कर लेता हूँ मेरे फ़ोन में। उप्स, फिजियोलॉजी नोट्स, यस। तो मैंने फिजियोलॉजी का, तो मैंने नोट्स का बनाने को स्टार्ट कर भी दिया है। जस्ट अ सेकंड यार, ये ना फोकस नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके, हॉस्टेल फीस किती आहे? जीएमसीला हॉस्टेल फी 4000 आहे ना, मी तरी 4000 दिली होती, सो आता पण तेवढीच असावी। सी आय स्टार्टेड मेकिंग, अरे ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है? I started making these notes. So these notes will be very useful for you all. I'm going to launch them just once I finish completing. अभी तो मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा focus करने वाला, because I already took a gap of 1 month in between. How many score do you require for GMC? Gauri, sorry Gauri, I don't know your category first of all, but Gauri, I've made many videos on cutoff. I guess in this month only I made a cutoff video for GMC. But if you are from the open category, then you need to score above 630. Okay. I wanted to do BSc nursing. Is GMC good for nursing? Yes, GMC is absolutely good for nursing. I've heard a lot about the nursing college of GMC. Nursing college is very good, and also the practice is really good at GMC. Bro, GMC मध्ये फीस डिफरंट आहेत का कॅटेगरी वाईज? ऑफकोर्स प्रत्येक मेडिकल कॉलेजला आहेत ना, की ओबीसी साठी 50% फी असते, SC ST NT यांच्यासाठी तर आय गेस 25-30,000 पर्यंत फी आहे. इट्स इफ्तार टाइम, ओ सबा, अच्छा, हैप्पी रमजान, जो भी जिनका भी रोजा है, and all my Muslim friends who are, watching the live. Okay, enjoy your iftari now. I really have a sweet memory of my friend Aspia, जिसके घर पे मैं एक बार इफ्तारी के लिए गया था. I swear to God, iftari food is so tasty. Like मेरी कॉलेज के पे मोहम्मद अली रोड है, and that day I was talking to my friend Burhan about the same. कि यार बुरहान कभी तो हमको लेकर जाना मोहम्मद अली रोड पर। सानिया शेख, थैंक्स सर, वेलकम सानिया। ओके, इंस्टा शॉर्ट्स इज द हॉस्टल फैसिलिटी फॉर फर्स्ट ईयर? आई हर्ड दे डोंट गिव फैसिलिटी। सी इन as far as JJ is concerned, they do give hostels in first year. But for corporation colleges like Nair, Sayan, and KM, you do not get hostel in first year. After MBBS, what specialty do I want to go into? What specialty? My go-to specialty would be like touchwood. If given the chance, I really want to become a surgeon. And in surgery, I really wanted to get into something like ortho trauma surgery, ortho surgery, or neurosurgery, orthopedics, trauma, or neurosurgery, something like that. You were from which board? I was from HSC board. बाय बाय ब्रो, सॉरी माझा टाइम झाला. ओके, गुड गुड गुड. मी फोर्स पण नाही करते. ज्या लोकांचा पण अभ्यासाचा टाइम होतोय, गेट बॅक टू युअर स्टडीज. आय बी मोर दॅन हॅपी इफ युअर स्टडींग. ओके, तसं पण मी आता 2-3 मिनिटात लाईव्ह बंदच करणार आहे. स्टायपेंड इन जे 14-15,000 इन इंटर्नशिप. MBBS really hard? If not, then why MBBS takes you? MBBS suicide is more than even the studies now. The system should be blamed, because
सिस्टम में इतने ही है ना, अभी देखिए जैसे हम लोग का ही देखो, लाइक इट्स सो डिप्रेसिंग कि मैंने इतना अच्छा पढ़ाई कर कर भी, जो सब कुछ कर कर भी मेरा एक साल लाइफ का जा चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड, एंड गवर्नमेंट डिड नॉट हैव द फैसिलिटी। जैसे कि जनवरी का वेव इतना बड़ा नहीं था, दे कुड हैव टेकन एग्जाम्स इन जनवरी बट दे पोस्टपोन्ड द एग्जाम, नाउ आई डोंट नो व्हाई, but just I feel the system should be blamed. The studies are difficult, of course the studies are difficult, and ऊपर से कॉलेज का एनवायरनमेंट भी मैटर करता है ना। जैसे मेरे कॉलेज का एनवायरनमेंट चिल्ड है, चिल्ड इन द सेंस कि मतलब कंपटीशन है, बट तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें ऐसे कोई तुम्हारे सर पर बैठकर नहीं बोलेगा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जिनको पढ़ना है वो पढ़ते हैं, जिनको नहीं पढ़ना है वो लोग नहीं पढ़ते हैं। बट आई फील जेजे इज अ ब्लेस्ड प्लेस टू गेट इनटू। मतलब मुझे तो लगता है कि वो ना कट थ्रोट कंपटीशन है नहीं, बट ना कुछ मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे जहाँ पे ना बहुत पीयर प्रेशर होता है। देखो पीयर प्रेशर होना चाहिए बट अप टू अ लिमिट। I'm scoring 580 to 600. Can I get reach 615 next 3 months? Of course you can reach Insta Shorts. Scholarships भेटताना ट्युशन फीस पण मिळते का? एससी कॅटेगरी हो, ट्युशन फीस मिळते. ऑलरेडी फी कमीच असते तर त्या ट्युशन फीस पण परत मिळते. जीएमसी नांदेड होम सिटी वर्सेस जीएमसी नागपुर. I would suggest GMC Nagpur is really a good college, but if GMC Nanded is again a government college and अच्छा college है, तो अगर if you get GMC Nagpur go for it, but GMC Nanded is also good college. Sir, GMC में कौन सी स्कॉलरशिप आहे का? सानिया शेख, सो ना बहुत से स्कॉलरशिप्स है, मैं वीडियो बनाऊंगा उसका, तुम ना महा डीबीटी पोर्टल चेक करना, ठीक है, उस पर सारे स्कॉलरशिप्स का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जीएमसी नांदेड होम सिटी वर्सेस ओके, बीजीएमसी वर्सेस जेजे, अरे यार अब यू पुट मी इनटू डू और डाई सिचुएशन। I would choose JJ, the like for the millionth time again and again. Anyways, it's almost 1 hour since we have been live. It was a very fun interaction. Ghari is our okay. One last question. MDMS is there. How the NEET PG exam? MDMS is there. How the NEET PG exam? I did not get the question quite, but I feel that NEET PG के बाद ही MDMS कर सकते हैं, and it is also the licensing exam. Anyways, 1 hour हो चुका है. It was a very fun experience doing this live again. Although this time like I enjoyed it a lot. You know, let's just say मुझे बहुत मजा आया. ठीक है. Are MBBS and nursing students having same hostel? No. Nursing hostel is different and MBBS hostel is different. So anyways, I want to answer more of your questions, but you know time constraints है. And my mom came back from school and she's waiting. Like and even I want to talk to her. And today night I'm going to like order my favorite thing because आज exams हो चुका है. I'm going to order Chinese for myself. So till then, take care. Bye bye. Stay safe. Study well. And you know, कोविड के नए वेरिएंट से बचकर रहो यार प्लीज, कोई बीमार मत पड़ना, ठीक है। आई डोंट वांट माय सब्सक्राइबर्स टू गेट इनटू ट्रबल, ओके। सो टिल देन सी यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। चलो मैं रख रहा हूँ अभी, अभी तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई करो। बाय गौरी, बाय बाय, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय सानिया शेख, बाय इंस्टा शॉर्ट्स, ओके। चलो ठीक है, चलो टेक केयर, बाय।